Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. So we'll just wait for some few minutes because I see that people are joining in, and then we should be good to go with today's session on harmonic patterns. Darshan ji, good evening. Jas ji, good evening. All clear. Murthy ji, good evening. Great. Dinesh ji, good evening to you as well. Kasturi ma'am, good evening to you. Audio, video clear. Perfect. So we'll just wait for some few more minutes, a couple of minutes, and then we should be good to go. By the way, how many of you all were there for my last week's harmonic session, wherein we discussed what is Fibonacci retracement, what are Fibonacci extensions, hum Fibonacci. Just a second, guys. आप 5 मिनट दे लो तो चलो. Uh, okay, guys, just give me 5 minutes. We'll just start the session in 5 minutes from now. Okay, just give me 5 minutes. Uh, okay, guys, good evening. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box again. Do let me know if I'm audible and if my screen is visible. So, and let me know if we can start the session today. Is everyone settled in? Okay, great. So let us start off with harmonic patterns. So हमने पिछले week discuss किया था कि ये harmonic patterns क्या होते हैं. What are these harmonic patterns? ये Fibonacci retracements, Fibonacci extensions. So how many of you all were there for my last week's session on Fibonacci retracements and Fibonacci extensions? If you all can let me know in the chat box.
So how many of you all were there for my last week's session on Fibonacci retracements and extensions? आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हो. कृष्णा जी saying I attended, दिनेश जी saying yes, दर्शन जी saying yes. Okay, perfect. So आज हम एक वही हार्मोनिक पैटर्न्स का एक पैटर्न देखने वाले हैं जो है आपका ABCD पैटर्न. सो ये ABCD पैटर्न क्या होता है, इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका क्या मेन यूज है. We'll discuss that step by step going forward. So we'll discuss ये सबसे पहले हार्मोनिक पैटर्न्स होते क्या है. Then we will see what is this AB is equal to CD strategy, कैसे कंस्ट्रक्शन मतलब ये चार्ट्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, that is what we will see. Then I'll also teach you ये जो पैटर्न है ABCD पैटर्न, उसको हम ट्रेडिंग व्यू में कैसे बनाते हैं. एंड लास्टली we'll also see this with the help of an example. ठीक है. So what are harmonic patterns? So if you see harmonic patterns, they use Fibonacci ratios to identify potential turning points. The main purpose जो हम Fibonacci retracement I mean harmonic patterns use करते हैं, वो ये फाइंड आउट करने की कौन से प्राइस से एक पोटेंशियल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है. So that is the whole purpose of using harmonic patterns. If you remember 61.8 से यूजुअली गोल्डन रेशियो माना जाता है, वहां से एक रिवर्सल आता है. या हम 1.618 को देखते हैं जो उसका रेसिप्रोकल था 61.8 का, कि वहां से शायद हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स मिल सकता है. सो हम ये फ्यूचर में हम प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा जोन या ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां से पोटेंशियली हमें एक रिवर्सल देखने को मिले. सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ यूजिंग हार्मोनिक पैटर्न्स. So you get some high probability reversal zones आप find out कर सकते हो, but it is not as easy as it sounds. इसमें it takes a lot of practice. आप जितना ज्यादा चार्ट्स देखोगे, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका इसमें कंफर्ट लेवल आएगा. सो इफ यू आर लर्निंग हार्मोनिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है. बट इफ यू सी दिस फॉर अ कपल ऑफ अगर आप दो बार देखोगे वीडियो को, आई थिंक आपको इजीली समझ में आ जाएगा. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर कि मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊं. It's the most simplest of patterns. So there are a lot of patterns like ABCD है, there is something called as Gartley pattern, फिर एक bat pattern है, there is something called as a butterfly pattern, then there is a crab pattern, because ये जो bat, butterfly, crab है वो shapes में ये pattern बनते हैं. इसके लिए इनका नाम ऐसा Gartley, bat, butterfly दिया है. But today's session we will learn about what is AB is equal to CD pattern. Now what is the use case of harmonic patterns? The basic use case is आपको एक objective entry exit points मिले, which is purely based on price structures. We are not going to look at any indicators as such. Yes, for reversals we will still look at some couple of indicators that I'll discuss that when we are discussing that example. इसमें आपको ये it is very useful for you to identify reversal setups, as well as a point where you feel, okay, this is the point where the market is going to take a support or resistance and continue its trend. So these are the the main use cases of what harmonic patterns are. Now coming to the today's topic as to what is this AB and CD pattern. So it's the simplest of the harmonic pattern that is available out there. इसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. वेरी सिंपल. So there are legs. So A to B is one leg, B to C is one leg, and C to D is third leg. So अगर आप प्राइस को ऐसे अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जा रहा है, दैट्स A to B, दैट इज कॉल्ड एज वन लेग. फिर वो B से C आता है, दैट जो थ्रो बैक होता है, दैट इज कॉल्ड एज BC लेग, जो सेकेंड लेग है. एंड C से फिर से ऊपर जाता है और एक फोर्थ पॉइंट बनता है, दैट इज योर D पॉइंट. सो दैट C to D, दैट इज कॉल्ड एज अ लेग. AB इज इक्वल टू CD इन जो AB का जो लेंथ होगा वो सेम लेंथ होगा आपका CD का. विल कम टू दैट पार्ट. एंड जैसे कि मैंने बताया, जो हार्मोनिक पैटर्न्स है, दैट इज यूज्ड टू एंटिसिपेट पोटेंशियल रिवर्सल्स. यहाँ से आपको एक पोटेंशियल जोन्स आपको मिल सकते हैं जहां से आपको लगता है, जहां से आपको लगेगा कि शायद ये एक ऐसा लेवल हो सकता है जहां से द प्राइस कैन टर्न. यूजुअली हम क्या करते हैं, RSI डाइवर्जेंस देखते हैं ऑलरेडी बढ़ने के बाद, फिर हम देखते हैं कि
कुछ कैंडल स्टिक बेरिश पैटर्न या बुलिश पैटर्न बनाए कि नहीं वो देखते हैं, या हम ओआई से देखते हैं कि कौन से लेवल में कॉल राइटिंग है, कौन से लेवल में पुट राइटिंग है. सो वी ट्राई टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन प्राइस, based on OI, based on moving averages, based on, the support becoming resistance, resistance becoming support, based on candlestick patterns. So there are numerous ways in which you can find out support and resistance. But a more advanced way to find out what could be a potential reversal zone is by using harmonic patterns. And उसमें से जो हम हार्मोनिक पैटर्न्स आज सीखने वाले, दैट इज गोइंग टू बी और AB इज इक्वल टू CD पैटर्न. ठीक है. Okay. Uh, let's, I think let's straight come to the ABCD pattern now. So जो AB का जो लेंथ होता है, और उसको आप अगर, so for example A to B the price has moved, let's say एक लेंथ में मूव हुआ है, फिर देन B के बाद एक थ्रोबैक मिलता है हमें अंटिल C पॉइंट. आप A to B का जो लेंथ लोगे, उसको अगर आप C का लो पे लगाओगे, you will get the point where the D ends. The D point, the point where it ends, that length will be equal to the length of AB. We'll look with, अब लोग एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. Secondly, we are going to look at retracement. So अगर आप, या हम लोग लास्ट वीक में देखा था कि there are different Fibonacci retracements like 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 88.6. So these are the different Fibonacci retracement levels. Then we also saw what are Fibonacci extensions. अगर आपको याद है, retracement is used to find out support and resistance, whereas extensions are used to project अपना फ्यूचर प्राइस टारगेट्स. सो अगर आपको याद है, हमने रेसिप्रोकल का एक कंसेप्ट देखा था. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज रेसिप्रोकल, 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर यू विल गेट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर. तो अगर आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8 है, दैट इज 0.618. इफ यू डू 1 डिवाइडेड बाय 0.618, अगर आपको रेसिप्रोकल ढूंढना है 0.618 का, so 1 divided by 0.618, you will get 1.618. So that is how you project your Fibonacci extension. और जो आपका जो D point होगा इसमें, that will be your potential reversal zone. So there are two D points, एक D1 होगा, एक D2 होगा. तो आपको एक जोन मिलेगा. ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एक पॉइंट मिलेगा जहां से प्राइस वही पॉइंट पे टच करके नीचे आएगा. इट्स नॉट दैट. The price can go slightly above, price can be slightly below, but somewhere around that zone is where you need to find the reversal points. Is everyone with me, guys? If you all can let me know in the chat box. I hope अभी तक सब ठीक चल रहा है, and I hope आप लोग सब मेरे साथ हो, बिकॉज अभी तक हम थियरी डिस्कस कर रहे हैं. अब जब प्रैक्टिकल आएगा थोड़ा और, इट विल कीप गेटिंग टफर एंड टफर फ्रॉम नाउ. बट लेट मी नो गाइज इफ यू ऑल आर विथ मी. ओके. सो जो ए पॉइंट हमें मिल जाएगा, बी पॉइंट भी हमें मिल जाएगा, सी पॉइंट भी हमें मिलेगा. हमको जो ढूंढना है हार्मोनिक पैटर्न में, वो है कि ये डी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा या कौन सा जोन होगा जहां से हम ये रिवर्सल्स हंट कर सकते हैं. तो उसको हम PRZ बोलते हैं. अभी जेड को आप, ये जो जेड है उसको जेड बोलो या जी बोलो, इट्स वन एंड द सेम. सो इट इज कॉल्ड एज PRZ. दैट PRZ स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल रिवर्सल जोन. मतलब ऐसा कौन सा जोन है जहां से पोटेंशियली हम एक रिवर्सल देख सकते हैं. ठीक है. नाउ द स्टेप्स टू आइडेंटिफाई AB इज इक्वल टू CD पैटर्न. जो सबसे पहला आपको देखना है, यू हैव टू फाइंड एन AB मूव. सो आपको एक लो पॉइंट ढूंढना है, एक हाई पॉइंट ढूंढना है, और आपको एक थ्रोबैक चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ओपन अप माई पेंट हियर. आई थिंक नाउ वी विल डिस्कस alongside an example as well. So let me open paint on my screen. Just a second. Okay. So let's say this is your A point, this is your low point, and the price moves up from A and then it goes to B. This is your high point. This is your low point. And from B, it again comes back and there is a small throwback and it makes a low here. Low point. This is your low point and this is your high point.
Clear guys? So the first step that you need to identify in your harmonic pattern is आपको एक low point ढूंढना है, आपको एक high point ढूंढना है और आपको एक low point ढूंढना है. मतलब you need to find a pattern like this wherein there is one AB leg and so this is your AB leg. इसको A जो leg होगा इसको हम बोलते हैं AB leg. So this is AB leg and this is called as your BC leg. All clear guys? Is everyone with me? All good until now? कि जो सबसे पहला चीज आपको जो चार्ट पे देखना पड़ेगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्राइस हैज मूव फ्रॉम ए टू बी, इट हैज हिट अ स्विंग हाई एट बी एंड फ्रॉम बी द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन नाउ. मतलब एक थ्रो बैक मूव आया है या बुलिश भी हो सकता. आई विल कम टू दैट पार्ट वैशाख जी, कौन सा टाइम फ्रेम में है. आई हैव दैट कवर्ड. यूजुअली दिस इज टू बी डन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम. सो यू कैन लुक एट 1 day chart. You can look at 1 hour chart, you can look at 2 hours chart, you can look at 4 hours chart, और अगर आपको थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए तो यू कैन लुक एट 1 week चार्ट एज वेल. ठीक है, बट डोंट गो फॉर लोअर टाइम फ्रेम. 5-15 मिनट्स में ये इतना काम नहीं करेगा. Ideally, it is best suited for a higher time frame. 1 day, 1 hour, 2 hours, 4 hours. These are the time frames that you can look at. ठीक है. So ABC pattern. Okay, now what I'll do is I will also take an example on a live chart as well. Can everyone see the GMDC chart on my screen? क्या सभी लोग को GMDC का daily chart दिख रहा है मेरे screen पे? If you all can let me know in the chat box. So this is GMDC chart on my screen. So what I've done is, so this is the, so I'll just mark A, B and C points so that it is very clear to you. So I'll take a text here. So this low point is my A point. So I'll mention low here. From this low to this high, the whole leg is my A to B leg. So this is my B point. And then there was some small correction here and this becomes my C point. This is the first thing that we need to identify, where the price from A, it has gone to B and from B, the price has come to C here. Clear? That is the first step. कोई भी चार्ट देखोगे आपको A, B, C, at least ये 3 points तो आपको identify करने आना चाहिए. All good is the first step. Clear guys, how to identify the A, B move, A, B and C. So हमने 3 points देख लिया यहाँ पे. Clear? Now the step number 2 that we need to do here is, now we have to draw a Fibonacci retracement. हमें जो AB जो leg है from A to B जो price move हुआ है, वो leg में हमें Fibonacci retracement draw करना पड़ेगा. Now can anyone tell me how do I draw Fibonacci retracement? अगर आपको याद है हमने पिछले हफ्ते में ये वेबिनार में देखा था कि Fibonacci retracement हम कैसे draw करते हैं. How do we draw Fibonacci retracement? So this is GMDC chart. Now let's say I want to know how much has this BC retraced of this AB leg here. And I want to draw Fibonacci retracement connecting this point A low to this point B high. So how do I draw a Fibonacci retracement? ट्रेडिंग व्यू में अगर मुझे एक Fibonacci retracement ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा? So let me just zoom in even further for you so that it will be much clearer. Anyone in the chat box who can let me know how do I draw Fibonacci retracement of this AB leg here? ये पूरा A to B leg का मुझे अभी देखना है कि ये जो BC जो throwback हुआ है कितना retracement हुआ है. 23.6 हुआ है, 38.2 हुआ है, 50 हुआ है, 61.8 हुआ है, 78.6 हुआ है या 88.6 हुआ है. Can anyone help me? How do I draw Fibonacci retracement? Anyone who can take a guess in the chat box? Come on guys, let's keep it engaging, let's keep it interactive. नहीं तो आप बोर हो जाओगे हार्मोनिक पैटर्न्स पढ़ते पढ़ते. Exactly, you start with a low point and you correct the high point. So I'll go to my toolbar here on the left hand side. I will take my Fibonacci retracement. I will keep it at the low and I will go all the way until B. I'll slightly drag it towards my right, but this has to be at the B high point and I'll go slightly here. Okay.
So now I have got the Fibonacci retracement, guys. Now, can you all tell me where is the C point ending? The C point is ending at which level? Is it at 23.6? Is it at 38.2? Is it at 0.5? Is it at 61.8? Is it at 0.786? Or is it at 0.886? Where is the C point taking support here as? Because this is very important. Yes, correct. Bharatji is saying it is taking support at 61.8%. Perfect. So let me take up my Excel because I would need an Excel also now. Okay. So I'll write some numbers 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886. Okay. Perfect. So how do we get the reciprocal, guys? आपको याद है हम reciprocal कैसे ढूंढते हैं numbers का? So these are the Fibonacci retracement numbers. 1 divided by, can I say 1 divided by this? If I do, I'll get the reciprocal and I'll just copy paste it here. Okay, and इसको मैं 3 या 2 digit, 3 digits I'll do. Correct, guys? Now the Fibonacci retracement that we had here was 0.618. तो मैं इसको मैं थोड़ा yellow कर देता हूँ. So remember our Fibonacci retracement of the BC leg was 61.8 or you call it as 0.618. हमने उसका reciprocal भी निकाला यहाँ पे which is 1.618 here. ठीक है? Okay, perfect. Now let us go to, so we did the first point. हमने second point भी कर दिया. हमने fourth point भी कर दिया यहाँ पे. The fourth point is we use Fibonacci extension to find D. Now, how do you find Fibonacci extension? That will be the reciprocal of the AB का जो Fibonacci retracement है, वो FR का जो reciprocal होगा, that will be our Fibonacci D point. So हमने देखा 61.8 का extension is 1.618. So that becomes our one of the D points here. Now let's come to the third point here. अभी आपको AB मिल गया, आपको BC मिल गया. अगर आपको याद है what is the name of this pattern? AB is equal to CD. That means the length of AB, you keep it at the low of C and you have to mark D here. Let me show you in the chart कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे. So I'll go to GMDC. I'll remove this Fibonacci retracement. So if I'll go to my toolbar on the left and I take a trend line. Can everyone see this trend line here? I take this trend line and now I will measure the length from A to B. So I'll keep my trend line at point A and I'll go all the way until B here. Can you all see this A to B? There is one trend line that I have drawn. Let me know guys in the chat box. यहाँ पे मैंने A से B point पे एक trend line मैंने बनाया हुआ है. Let me know if you are able to see this trend line here. So what I've done essentially by taking the trend line is by connecting point A and by connecting point B, ये ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे पता चलेगा कि ये जो A to B का जो लेंथ है वो कितना बड़ा है. Now what I will do is I will keep my cursor here on A to B. I'll click on this trend line and I'll do Control C and I'll do Control V. So when I do Control C and Control V, obviously I'll get that same line in length. You can see मेरे पास और एक ट्रेंड लाइन आ गया and I will keep it at the low of C. ये देखो ये जो C का जो लो है यहाँ पे, can you all see this low point C? ये C का लो पे मैंने यहाँ पे रख दिया है थोड़ा सा ऊपर. This is, it should be here. Can you all see? और ये जो A to B का जो लेंथ है, पहले मैंने लेंथ ड्रॉ किया, फिर कंट्रोल C कंट्रोल V किया and I took that same trend line and I kept it at the low of C here. And can you see the point is ending here at this point? So what I will do is I will take a horizontal ray. ये वाला जो point है यहाँ पे, this line, obviously आपका यहाँ पे पहला आपका प्राइस यहाँ पे टच हुआ है, बट क्योंकि हमें लेंथ, क्योंकि the
ट्रेंड लाइन जो है थोड़ा स्लैंटिंग है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन आपको स्लैंटिंग मिलेगा, बट यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस बिकम्स योर पॉइंट D1. दिस इज योर फर्स्ट D point here. Is this part clear, guys? Understood? How did we find the length of CD with the help of AB leg? If you all can let me know in the chat box. All good? सिंपल है. हमने पहले A to B, अगर चलो फिर से करते हैं यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझा तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पे जाते हैं. लेट मी ओके इरेज दिस, पूरा इरेज करता हूँ. हम ट्रेंड लाइन पे जाते हैं यहाँ पे. आई विल मार्क इट फ्रॉम A to B. मुझे पूरा A to B लेग का जो लेंथ है वो मिल गया. अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V करूंगा. आई विल गेट द सेम लाइन एंड आई विल कीप इट एट द लो ऑफ C. ये जो C का लो है मैं वहां पे रख दूंगा इसको, एंड आई एम गेटिंग समवेयर हियर. और ये जो हॉरिजॉन्टल रे रख के यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूंगा, एंड दिस पॉइंट बिकम्स माई D1, एंड इसको मैं निकाल दूंगा यहाँ पे. Is this part clear, guys? Understood? How did we get D1? If you all can let me know in the chat box. All good until now? Is everyone with me, guys? Do let me know again. So before I proceed to the next point, आपका एक बार yes आ गया तो then I will go to the next point here, guys. So I'm just waiting for your comments in the chat box. Let me know if you are able to understood the first 3 points. First, we identified the ABC leg. फिर हमने ए बी लेग पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया. फिर हमें पता चला BCC लेग 61.8% पे रुका. फिर वो होने के बाद व्हाट वी डिड वाज, हम ए बी का लेंथ देखे. फिर वो लेंथ हमने C के लो पे रख दिया और हमें यहाँ पे एक D1 मिल गया. इज इट क्लियर? ऑल गुड? Yes, Dinesh ji saying yes, Vaishak ji saying yes, Sagar ji, okay, perfect, super. Now let's go back to our PPT again. So we have projected CD, we have got D1. Now what we will do is, now we have to use Fibonacci extension on the BC leg. फिबोनाची एक्सटेंशन हम लोग ढूंढेंगे. अभी आपको याद है हम फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे करते थे? अभी हमें मालूम है कि AB का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था दैट वाज 61.8%. We calculated the reciprocal, we got the reciprocal as 1.618. So आपका D1 will be the length of AB. आपका D1 मिल गया आपको. Now your D2 will be your 1.618 level. Now, before we figure out where is my D2, can you all tell me how do we apply a Fibonacci extension? If you remember, हमने Fibonacci extension देखा था last time. If I want to apply a Fibonacci extension and want to plot 1.618% Fibonacci extension, how do I do that? If you all can let me know in the chat box. Because Fibonacci retracement is easy. You connect a low point and you connect a high point. But how do we draw a Fibonacci extension? अगर मुझे BC लेग जो है 61.8, उसका रेसिप्रोकल इज 1.618. अब मेरे को फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करके 1.618 प्लॉट करना है ऑन द हायर साइड. सो हाउ डू आई डू दैट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. Wow, superb. Shankar ji saying we start from C, we go to B, and then we again come back to C. Perfect. I think Shankar ji ने काफी ध्यान से देखा है मेरा लास्ट वाला वेबिनार. Perfect. So it has to be CBC. So I'll take Fibonacci extension. I'll go to trend based Fibonacci extension. I'll have to start with C. So I'll go slightly towards my left. I'll start with C. I will go to B. And I will again come back to C. Third, I'll go slightly to my right here. And I'll place it here. So now I'm getting, you can see 1.618. I'll take a horizontal ray and I will keep it at 1.618 at this level. And this level becomes my D2. Understood, guys, what I did? Fibonacci extension. So Fibonacci extension, you have to go to your tools. You have to start with C. So I go slightly towards my left.
I start with C, I go to B, and then I again drop back to C, and I go slightly to my right, and I will get some Fibonacci extension levels on the upside. And what I have to do is I have to find where 1.618 is, and I have to mark an horizontal line here, and I have to remove this. So are you getting D1 and D2? If you see, my D1 is at around 319 level. So my D1 अगर आप देखोगे 319 के जोन पे है, और अगर आप that is, sorry, my D1 is at 319, and if you see my D2, that is at around 312. So आपका जो PRZ है, that, so your potential reversal zone is 312 to 319. यहाँ पे जाके आपको एक रिवर्सल मिल सकता है, that is what it means. But I'll come to that part कि actually में कब ट्रेड करना है और क्या देखना है. We are not done yet, guys. We have just figured out what is D1 and what is D2. One D1 will be the length of AB. The other D2 will be जो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका रेसिप्रोकल निकाल के जो आपका फिबोनाची एक्सटेंशन आता है, वो B2C में फिबोनाची एक्सटेंशन निकाल के आप और एक लाइन मार्क कर दोगे, तो वो जो जोन है 312 से 319, that zone is called as your PRZ or your potential reversal zones. Is it clear, guys? All good until now? If you all can let me know in the chat box. I hope आप लोग मेरे साथ हो अभी तक. I know it is slightly tough. A lot of थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए. But it's okay. You're learning this for the first time. I'm sure a lot of you all must be learning about harmonics for the first time. But it's okay. Even if you are getting at least 40 to 50% of what I'm teaching today, don't stress yourself much कि अरे ये क्या हो गया, इतना सब एडवांस कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे समझेगा. It's not about that. It's just that first time है. I think the more you do it, I think the better you will get it here. ठीक है, हो गया. So we have marked the potential reversal zone. Now the sixth point is we have to wait for a confirmation. So जैसे ही ABC points मिल गया, हमने ऊपर पता चल गया कि 312 319 ये वाला जो जोन है वहां पे शायद हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल मिल सकता है. ठीक है, फिर हमने 5 पॉइंट्स कवर कर दिया. नाउ वी विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन. नाउ हाउ डू वी गेट अ कंफर्मेशन? नाउ कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर कंफर्मेशन, that's okay. From C to D the slope is high. That's okay. See, A to B का जो लेंथ है, भले ही वो स्लोप हाई है, we are just getting a line here. The horizontal line जो हम लोग मार्क कर रहे हैं हरीश जी, that is important. Even if the slope is slightly like this, it's okay. The important is where is that slope ending and from what is the horizontal line that we are getting here. That is important. ठीक है. So how do we look for confirmation now? So confirmation के लिए you can use a combination of RSI, moving average and ADX. Higher time frames are more reliable. Like I said, you can go for 1 hours, 4 hours, 2 hours, 1 week. These are the time frames that you can look at. And like I said, don't trade any pattern without confirmation. And you have to analyze broader market context as well. So अगर पता चला broader markets में ही selling pressure है और आप bullish opportunities ढूंढ रहे हो, या market में buying है और आप selling opportunities ढूंढ रहे हो, you should not go against the trend. You should always understand which are the sectors that are doing well, which are the sectors that are not doing well, and accordingly go for those sectors and basically stay with the trend. That is the whole purpose of this. What are some common mistakes that you need to avoid? Assuming that all patterns work. It's never that all the patterns don't work. आप ट्रेंड को इग्नोर कर देते हो अगर ट्रेंड अप है, डाउन है, साइडवेज है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया अबाउट ट्रेंड. No confirmation means high risk. Now I'll tell you one common mistake that a lot of people make, especially when it comes to harmonics. अभी आपने वो डी पॉइंट हमने मार्क कर दिया 312 से 319 का जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, वी हैव मार्क्ड दैट पॉइंट. Basically what that means is whenever the price will come to that 312 to 319 zone, the price can potentially reverse from that zone. Maybe from that zone itself, maybe slightly above that zone, maybe slightly below from that zone, but somewhere around that zone the price is going to reverse. So a lot of people, what they do is जैसे ही वो price वो zone पे आ जाता है, they will sell because they know that is the turning point. So without looking for any confirmation, the moment it touches 312,
जैसे ही वो पोटेंशियल रिवर्सल जोन के अंदर आ गया दे विल सेल इट ऑफ, थिंकिंग कि हार्मोनिक पैटर्न में हमने ये पढ़ा था कि ये जोन में आ गया तो सेल करना है क्योंकि यहाँ से इसको नीचे जाना ही है. The one common mistake that they have done is they have ignored the confirmation. Now confirmation कैसे करना है, we'll come to that part. ठीक है. I'll come to confirmation here. So step one we figured out ABC का Fibonacci retracement हमने लगाया. So we applied Fibonacci retracement on the AB leg. फिर हमने लेंथ मार्क किया, AB का लेंथ मार्क किया ट्रेंड लाइन से, कंट्रोल C कंट्रोल V किया, we kept it at the low of C and we got where the D point is going to end. Then what did we do? We looked at the Fibonacci retracement that was 61.8%. हमने उसका रेसिप्रोकल निकाला 1.618. हमने एक जो डी पॉइंट है वो ए बी का इज इक्वल टू सी डी जो लेंथ है वहां पे मार्क किया. दूसरा जो है वो हमने रेसिप्रोकल निकाला था 61.8 का जो 1.618 है, तो वहां पे हमने दूसरा डी पॉइंट मार्क कर दिया था यहाँ पे. ठीक है. नाउ कमिंग टू द कंफर्मेशन पार्ट हियर, लेट मी गो टू द चार्ट अगेन. Guys, is everyone with me? If you all can let me know in the chat box. All good until now? अब मुझे एक बार चैट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज अभी जो कंफर्मेशन जो हम लोग देखेंगे वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने वाला है अब. सो वी हैव गॉट द PRZ which is 312 to 319. Now the most important thing like we discussed is we have to wait for a confirmation. हाँ ठीक है, समझा कि 312 से 319 में एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, बट कैसे पता चलेगा कि वहां से प्राइस रिवर्स हो, बिकॉज वी नीड सम काइंड ऑफ इंडिकेशन फ्रॉम द प्राइस, राइट, दैट द प्राइस इज एक्चुअली रिवर्सिंग फ्रॉम दैट जोन. तो आप क्या देख सकते हो, या तो कुछ बेरिश पैटर्न बना वो देख सकते हो, या आप RSI डाइवर्जेंस बना या वो देख सकते हो, या आप देख सकते हो ADX काफी पीक पर पहुंच गया है, RSI काफी 80-90 तक पहुंच गया है, तो वहां से एक रिवर्सल आ सकता है, वो आप देख सकते हो. या आप देख सकते हो ऊपर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है वो लेवल पे 320 315 के आसपास, तो आप देख सकते हो शायद यहाँ पे प्रेशर होगा स्टॉक के लिए, तो वहां से वो स्टॉक गिर सकता है. These are some of the confirmation. So what we need to do is we have to see what is the first time that the price moved towards the PRZ zone. So agar aap dekhoge, we had ABC levels. The first time the price moved to this zone, can I say, was on 16th of April 2025. If you all can let me know in the chat box. So 16 April 2025 was the first time the price moved up and entered that PRZ zone, which is your potential reversal zone. And the chart that we are seeing is the daily chart. अब तक हम दूसरे टाइम फ्रेम पे गए नहीं है, अब तक हम इसको डेली चार्ट में ही देख रहे हैं. So can I say the first time the price entered the PRZ was on the 16th of April. Now what I will do is, whenever I see the price moving to the PRZ, when I'll have back of the mind में मेरा ये रहेगा कि 312 319 ये वाला जोन से मुझे एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है. Now I see that 16th April को फर्स्ट टाइम वो 312 के ऊपर क्लोज दिया था GMDC. So what I will do is I will now go to a 5 minutes time frame and I will now go to 16th of April. I will go to 2025 April, 16th of April. Yes. Okay. Can you all see this, guys? Can everyone see 16th of April? Let me know आपको 16 अप्रैल को कुछ दिख रहा है यहाँ पे. So this is my 16th of April, the first time when the price entered the PRZ zone for GMDC, guys. If you all can let me know in the chat box. जिस दिन वो PRZ जोन पे गया उसी दिन मेरे को 5 मिनट्स, बिकॉज अर्ली रिवर्सल आइडेंटिफाई करने आप डेली चार्ट 4 आवर्स चार्ट पे नहीं देख सकते हो, आपको अर्ली रिवर्सल ढूंढना है, तो यू हैव टू मूव टू अ लोअर टाइम फ्रेम. दैट्स द you know that's the reason why we are moving to a lower time frame, because ये रिवर्सल, अगर ये लेवल से रिवर्सल आना है तो मुझे सबसे पहला जो रिवर्सल आएगा वो लोअर टाइम फ्रेम पे आएगा, तो मुझे डायरेक्टली 5 मिनट्स चार्ट पर जाके देखना है and I have to hunt for some reversal signs. Now if you see what has happened on the 16th here, okay, Ravi Kumar ji is saying again on the time frames. Guys, is the ABCD part clear?
अब तक हमने जो भी किया था वो डेली टाइम फ्रेम में ही किया था। ये जो D1 D2 निकाला था 312 से 319, ये सब अभी तक हम जो भी काम किए थे excluding the confirmation was all done on the daily chart here. इतना पार्ट क्लियर है रवि जी? अब तक हमने जो 312 319 का जो जोन है वो हमने सिर्फ डेली चार्ट पे निकाला था अब तक। जैसे ये सी बन के थोड़ा सा रिवर्सल आता है तभी हम ये लेवल्स प्लॉट करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्राइस ऊपर जाने पर ही हमें इसको प्लॉट करना है। द फर्स्ट टाइम द प्राइस केम टू दिस जोन, दैट इज यहाँ पे जब सी से रिवर्सल आया और फर्स्ट टाइम प्राइस ये पीआरजी में आया, दैट वाज ऑन दी 16th ऑफ अप्रैल। तो मुझे 16 अप्रैल को क्या करना है, 16 अप्रैल से मुझे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ट्रैक करना है और यहाँ पे मुझे जाना है 16 अप्रैल को। So this is my 16th April year. I hope now you can see the 5 minutes chart of 16th of April. Can you all see this? 16th of April ko first time, this was the time when GMDC entered its PRZ for the first time. Now look at the chart carefully, guys. This is on the 16th of April. I have two indicators on my screen. One is RSI and one is ADX. Can you all tell me if you are able to spot any reversal signals on a 5 minutes chart? Look at the chart carefully और मुझे बताना कि आपको कुछ रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं कि नहीं 5 minutes चार्ट पर। Let's see how many of you all are actually able to find out a reversal in this on a 5 minutes time frame. See what all things you can find it out here. So we know 319, 312. We just have to keep hunting for reversal signs now. It could be any reversal sign, any damn thing that you know about technicals, whether it's ADX, RSI, moving averages, call writing, candlestick bearish patterns, uh, anything for that matter. आपको एक strong reversal signs दिखना चाहिए कि the price is kind of losing strength near its zone and chances are that a reversal is likely. But ऐसा नहीं कि वो PRZ से ही reversal आया। अगर आप देखोगे 319, 312 मेरा PRZ था, बट प्राइस उसके ऊपर भी गया है, बट वो प्राइस उतना ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया। Now there are a couple of observations here, guys. Yes, as Harish ji and Dinesh ji has mentioned, look at RSI. RSI has gone to almost 94 mark on a 5 minutes chart. This itself is one indication that GMDC is overbought, even though it is on a 5 minutes time frame. And you getting a stock in an overbought territory near its PRZ zone gives you a slightly higher conviction ki maybe the reversal might be round the corner. So one thing is, I agree, Harish ji saying RSI is above 80. Guys, anything else that you can identify from the ADX? If you all can let me know in the chat box. I think I know Dinesh ji uses a lot of ATX. So दिनेश जी, अगर आपको कुछ ADX से एक सिग्नल मिल रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि शायद एक रिवर्सल बन सकता है यहाँ पे, or anyone else can take a guess, guys. I think if RSI 80 is a good observation, it is an overbought and it's near overbought and with the price in the PRZ zone. Secondly, anything that you observe in ADX? I have observed something in ADX here, guys. ये 5 minutes का ADX है, भले ही 5 minutes का ADX है, but I do see something interesting in the ADX as well. अगर आपने मेरा ADX का वेबिनार अटेंड किया होगा तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो शायद आपको पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ADX towards lower direction, okay, yes, it is. But something happened between 16th and 17th, Shankar ji. Between 16th and 17th of April, something happened. What is it that has happened between 16th and 17th? If you all can, what is it that the ADX was indicating? अगर आपको याद है, हमने ADX के सेशन में ADX at peak and ADX at bottom can suggest some trend reversals, अगर ये पॉइंट अगर आपको याद है हमने डिस्कस किया था।
Look at ADX was at its peak, guys. On a 5 minutes chart, this was the peak point for GMDC. That was around 72, 73. इसके बाद से ADX cool off हो गया था. इसके पहले भी ADX नीचे था. So not only about 25, चंपा जी, दिनेश जी, look at, can you see ADX peaking out here? जब RSI पीक आउट कर गया था 90 के आसपास, उसी टाइम आप देखोगे ADX भी पीक आउट कर गया था उसी टाइम पे. ये दोनों एक इंडिकेशन है कि जीएमडीसी अब एक ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है. ये एक पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है. करेक्ट. ओके, व्हाट एल्स आर यू सीइंग फ्रॉम आरएसआई गाइस? हरीश जी, चप्पा जी, दिनेश जी, विनय जी, शंकर जी, क्या लग रहा है आपको? क्या आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है 5 मिनट्स चार्ट पे? चलो, आरएसआई अबाउ 90 दिख रहा है, एडीएक्स काफी पीक आउट हो गया, वो भी दिख रहा है. Are you able to spot any RSI divergence on a 5 minutes chart that is indicating early signs of a reversal? Look at this. The price has made a new high. RSI has gone down. Can you all see there is an RSI divergence signal on my 5 minutes chart as well in GMDC? Yes. बट डू वी ट्रेड ओनली आरएसआई डाइवर्जेंस? नो. इफ यू रिमेंबर, आरएसआई के साथ हम कभी भी ट्रेंड लाइन यूज करते थे. तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन में जाऊँ और मैं 5 मिनट्स का ये लोज फिगर आउट करूं, दिस इज वेयर आई गॉट माय ट्रेंड लाइन ब्रोकन. दिस, कैन आई से दिस इज वेयर माय ट्रेंड लाइन ब्रोक? भले ही पीआरसी 16 को आ गया था, बट यू सी वी आर गेटिंग अ रिवर्सल सिग्नल समवेयर अराउंड 23rd. एंड लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड लेटर. द प्राइस केम बैक टू इट्स पीआरसी जोन, languished at the PRZ zone here, and you can see it fell until 290 levels. The moment we got RSI divergence somewhere around 320, 325, and from there onwards, we went down until 291. I think this was even before the Operation Sindoor. ये देखो, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ अराउंड 327, 328, द प्राइस स्टार्टेड टू फॉल एंड द प्राइस थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने मिला अंटिल 290 लेवल्स. So this is the confirmation that you should be seeing on a 5 minutes chart, guys. Is this clear? Understood? I hope आपको समझ में आया मैंने क्या सिग्नल्स देखा था यहाँ पे. So if I have to show you with the help of a chart now, so we saw RSI was almost at its peak. It was almost near 90. The price was making higher highs while the RSI was making lower highs. अगर आप देखोगे ADX काफी पीक पर पहुंच गया था. This was the peak for ADX, which indicated that GMDC is in an overbought zone. फिर RSI जैसे ही हमने ड्रॉ किया, हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया यहाँ पे, और जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा, we could see the price went down. Then there was a retest to its potential reversal zone. And from there onwards, from almost 320, the price fell until 288, 285 levels here. So this is the move that you need to capture. How did you know this level? आपको मालूम था 312, 319 एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है. फिर जैसे ही प्राइस वो पोटेंशियल रिवर्सल जोन में आया, 5 मिनट्स चार्ट में आप देखने लगे, यू गॉट ओवरबॉट सिग्नल इन आरएसआई, ओवरबॉट सिग्नल इन एडीएक्स, बेरिश डाइवर्जेंस इन आरएसआई. और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और जैसे फिर से पीआरजी में आ गया, from there onwards the price started to go down. So this is the beauty of harmonic patterns. You can get the D point, and once you figure out what is your potential reversal zone, you just have to go to 5 minutes and hunt for those reversal signals and take a chance. That is what this whole bullish AB is equal to CD pattern is all about. Is that clear, guys? Do let me know in the chat box. समझ में आया? I know शायद थोड़ा सा अभी भी टफ लगा होगा because ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. Price had entered on the 16th, yes, Harish ji, but we didn't get any reversal signs on 16th. Na? On 16th, like I said earlier, जैसे ही पीआरसी में आता है, people short it. But अगर 16th को जाके it went until 340. After moving to 16th, we have to keep looking for reversal signs on a 5 minutes chart and enter when we have actually got a proper reversal here.
So that is how we enter into these harmonic patterns. 16 को आया, but 16 को अगर रिवर्सल मिल जाता, then it would have been good, but there was no reversal. But yes, there were signs of reversal on 16. If you see, RSI was almost at 90, ADX was almost peaking out. So we know for a fact that ये जो uptrend है वो थोड़ा सा अभी strength, शायद एक reversal was on the cards, but it got confirmed when we had an RSI divergence and then when we got a trend line breakdown. So when it reversed from 340 and it came to 320, that is when we got a confirmation saying, okay, there is a bearish divergence and chances are that the price can fall from this level here. So you wouldn't have technically entered on 16, you would have entered at the trend line breakdown, that is on the 23rd of April. Clear, guys? All good? And the last part is, okay, now when you have entered into that position, कब आप enter करोगे? जैसे ही ये trend line breakdown होता है, that is where you will take a chance. And ये जो trend line के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर आप stop loss रखोगे, because एक बार वो PRZ में आ गया, PRZ के ऊपर is where you will keep your SL. And what do we do here is, now we have the D points. तो अभी आपको कहाँ पे एग्जिट करना है नीचे, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो A to D लेग है उसका आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना पड़ेगा. स्टेप 1 में हम क्या किए थे, सिर्फ A to B लेग का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था और हमें C पॉइंट ढूंढना था यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे, A से D पूरा लेग को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और उसका जो 38.2% है, which comes to around 294. So you have to take the high point, जो एक्चुअली जो आपका हाई पॉइंट है, वो पूरा पॉइंट, पूरा लेग का 38.2% comes to 294. So if you have shorted around this level, which is around 325, 320, your exit would be somewhere around 294 levels, which is where the 38.2% Fibonacci retracement is placed. तो अब जैसे ही 38.2 आ गया, आप वहां से एग्जिट कर दोगे आपका पोजीशन को. So this is how you use harmonic patterns, guys. Shankarji is asking, this means this harmonic pattern is, yeah, the whole purpose of harmonic pattern is to find out trend reversals. कि ऐसा कौन सा जोन है जहां से हमें पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिले. इज दैट पार्ट क्लियर, गाइस? इससे आपको ये भी, अगर इवन इफ यू डोंट वांट टू एंटर इनटू अ न्यू पोजीशन, एटलीस्ट यू विल नो. अगर आपने मान लो जीएमडीसी 230 या 240 में लेके रखा हुआ है और आपको जानना है व्हाट विल बी एन आइडियल लेवल टू एग्जिट, सो योर पीआरजी ऑफ 312 टू 319, जब वो जोन पे जब प्राइस आता है, दैट इज व्हेन यू शुड बी एग्जिटिंग योर पोजीशंस एज वेल, बिकॉज हाई चांसेस है कि वहां से एक पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है. सो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी करके रखे हो, आपको जानना है कि का इसको बेचना चाहिए, इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग एग्जिट्स ऑल्सो, शंकर जी. एंड सेकेंडली, अगर आपको एक नया रिवर्सल लेना है, ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड लेना है, सो यू हैव टू हंट फॉर अ कंफर्मेशन ऑन अ 5 minute चार्ट. Is that part clear, guys? All good until now? If you all can let me know in the chat box. I hope this session on harmonic patterns was useful. And I think आज कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको. So, did you all find it easy, tough, extremely difficult? What is your view on harmonic patterns, guys? If you all can let me know. क्या लगा आपको? Was it easy? So this is just one of the harmonic patterns, that is AB CD pattern. So there is a lot of like bat patterns hai, Gartley patterns hai. So we'll cover that over the course of next few months. We will almost cover all the harmonic patterns, because हर एक harmonic pattern का अलग अलग characteristics है. If I'm a positional trader and predict PRZ, then daily time frame, Dinesh ji, 4 hours time frame and 2 hours time frame. These are the 3 time frames you can look at: 2 hours, 4 hours and daily. भले ही आप ये 2 hours 4 hours डेली टाइम फ्रेम में आप पीआरजी ढूंढते हो, कंफर्मेशन के लिए आपको 5 minutes में ही आना पड़ेगा, इवन इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर. ओ यस शंकर जी, यस, आई विल शो यू ऑन ट्रेडिंग व्यू एज वेल. मैं आपको ये बताना भूल गया. अच्छा, गुड, यू रिमाइंडेड. सो यू विल फाइंड दिस पैटर्न ऑन ट्रेडिंग व्यू एज वेल, गाइज. आई विल टेल यू, आप ट्रेडिंग व्यू से काफी इजी हो जाएगा आपको. मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है? सी दिस, ओके.
So you go to the toolbar. Can you all see first, second, third and fourth? ये जो fourth option है यहाँ पे, you go to this fourth option. आपको देखो काफी सारे पैटर्न मिलेंगे. साइफर पैटर्न, एक्स ABCD पैटर्न, ABCD पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न. आपको ABCD पैटर्न पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन ABCD पैटर्न. स्टार्ट विथ A, go to B, go to C. Your C is somewhere around 0.619. एंड आपको ये जो डी पॉइंट कहाँ पे रखना है पता है? कैन यू टेल मी ये डी पॉइंट कहाँ पे रखूं? ये डी पॉइंट मुझे रखना पड़ेगा 1.618 पर. सो 1.618, वेयर इज इट? 1.6. okay, I'll keep it at 1.62. done. So this is where my D point is. ये 0.619 मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट था और ये डी पॉइंट को मैं कहाँ पे रखूंगा? 1.618 पर. सो ये वाला जो जोन है दैट इज माय पोटेंशियल रिवर्सल जोन. सो यू कैन यूज ABCD पैटर्न लाइक दिस ऑन ट्रेडिंग व्यू एज वेल, शंकर जी. क्लियर? सो यू कैन यूज द ABCD पैटर्न. it's very easy to use. So that is how you can use ABCD patterns. So आपको length find out करना, फिर वो Fibonacci extension लगाना, वो नहीं, सीधा ये पैटर्न से you have to find out what is this Fibonacci retracement number, and accordingly you have to keep the D point at that level, and that level will become your potential reversal zone. Is it clear, guys? All good? I hope it was a good session today, and I hope you all learned something new today as well. Okay, so that was all from today's session, guys. And next Wednesday again we'll be meeting for the webinar, and next Wednesday I'll be teaching you about candlestick patterns. So it's going to be pretty much easy webinar next week. If the stock has retraced 23.8, so yeah, so for that what you need to do is 23.6. so आपको ये 4.23 पे that will be your D point, दिनेश जी. so जो भी आपका FR नंबर है उसका जो रेसिप्रोकल आता है वो आपका डी पॉइंट बन जाएगा. इन आवर केस इट वाज 61.8 एंड हेंस इट वाज 1.618. अगर आप 23.6 मिला तो आपको 4.23 वो वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी योर डी पॉइंट. क्लियर दिनेश जी? ओके, चलो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम today's webinar, guys. I hope it was informative and you all learned something new today. So that was all about this week's webinars and the mid-market sessions. Happy weekend to everyone. I think take some time off on Saturdays and Sundays. And I'll meet you soon again on Monday at 12:30 for the mid-market session on SBI Securities YouTube channel, guys. Yeah, you can say that, Harish ji. Yeah. Chalo, bye, guys. Take care. Happy weekend. And see you on Monday at 12:30, guys. Bye, guys. Take care and see you.